हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गॉडमोड विनी। आज प्रो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्वेस्ट। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, इस वीडियो में हम सेबेस्टियन की दोनों क्वेस्ट करेंगे। ये साइड मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड मिशन रिलेशनशिप क्वेस्ट है जिसमें हम इम्पीरियो अनलॉक करेंगे। इम्पीरियो एक अनफॉरगिवेबल कर्स है क्रूशियो की तरह। एंड उसके बाद हम सेबेस्टियन का दूसरा मिशन करेंगे जो कि है मेन मिशन। तो लेट्स डू इन द शैडो ऑफ टाइम एंड इन द शैडो ऑफ माइंड। दोनों मिशन करते हैं ब्रो। एंड सेबेस्टियन पीछे खड़ा है तो इससे बात करते हैं। You're here. Good. चलो भाई। Sebastian, that relic you mentioned, I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. ओके, इसकी बहन, जैसे आप लोगों को पता है, एन बहुत बीमार है बेचारी। I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. स्टूडेंट रिपोर्ट असाइनमेंट yielded okay. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. तो करते हैं क्वेस्ट सेबेस्टियन के साथ। हमारी जो भी अनफॉरगिवेबल्स। I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. सेबेस्टियन के साथ हमने ब्रो बहुत सारी क्वेस्ट करी एंड ये डार्क मैजिक से रिलेटेड क्वेस्ट है इसकी सारी। म्यूजिक इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है भाई? स्पाइडर से लड़ना है क्या? At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be Incendiary. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. ओए Revelio. ये क्या करेगा अगर हम इसको? Opening all of these is tempting. खैर जल्दी से मैं एक बार ये कर देता हूँ। ये वाली स्पेल चाहिए नहीं। This room is taller than it looks. थोड़ा नीचे एंड फ्रीज। ये क्या था भाई? ओके, फ्रीज हो जा। यहाँ पे कुछ है। Finding a Revelio. conspicuous loft. Brilliant. इसको खींचूंगा तो क्या स्पाइडर बाहर आ जाएंगे? Accio. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. ठीक है, चलो चलते हैं। एक ये रहा चूहा। हेलो। बहुत सिंपल है स्पाइडर। ओ तेरी, सॉरी। बहुत जल्दी बोल देता हूँ ब्रो मैं। We've rid the world of another spider. I shall sleep better tonight. Incendio. Accio. ये क्या भाई? ये नाइस। Watch your step. I nearly slipped there. Revelio. ये रे स्पाइडर। हेलो। Incendio. Confringo.
All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Incendio! We'll be fine, though. चलो ब्रो, ये बेकार गियर लूटने में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. मेन मिशन पे चलते हैं. इम्पीरियो इम्पोर्टेंट पहले वो करनी है हमने. 2 रास्ते जा रहे हैं यहाँ से. आई थिंक यहाँ से तो पहले नीचे जाना है. नीचे. ओ ये क्या आगे कुछ है? Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Accio! Incendio! Bombarda! Accio! चल क्या रहा है यहाँ पे? ओह, संभल के कहीं मेरे ना लग जाए. फाइंड द रेलिक. Revelio! रेलिक होगा यहाँ पे ब्रो. कॉमन सेंस. एंड कुछ करना है यहाँ पे. ये क्या है? You hear that? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio! आई थिंक हमने ना ये हड्डियाँ वो करनी है. पिक करके वहाँ ले जानी है ना. Wingardium Leviosa! चल. एंड ये हड्डियाँ आई सपोज हमने इसके ऊपर रखनी होगी. यहाँ पे. हाँ यहीं पे रखनी है. ये भी ले जाओ. ओए There's क्या कर something रहा here by the altar. है? ये भी यहाँ पे रखनी है. What did you find? कुछ नहीं ब्रो, मैं गेट खोल रहा हूँ. क्या फाइंड? अभी तो कुछ नहीं किया मैंने. ये भी हमें चाहिए होंगी हड्डियाँ. ये सारी हड्डियाँ यहाँ पे लगानी है हमने. हो गया, खुल गया शायद. चलो चलते हैं. आजा. ओए ये क्या था? मैं जा नहीं सकता हूँ. अच्छा, मुझे इससे पहले बात करनी होगी. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. चलो अब जा सकते हैं हम. एंड हम अकेले जा रहे हैं. वहाँ पे कुछ कर रहा है. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. हाँ हाँ बिल्कुल भाई, सिखा दे सिखा दे. मुझे तो सीखनी है ब्रो. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. अच्छा.
Imperio. There we go. Something troubling ahead. Imperio में लगाऊंगा यहाँ पे। ये फाइनली अनलॉक हो गई। ये देखो, हम एनिमीज को अपने वश में कर सकते हैं स्पेल से। और ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। तो 2 स्ट्रॉन्ग स्पेल है हमारे पास। बैंड बजा देंगे ब्रो, टेंशन ना ले। हेलो। काफी इजी था। और Incendio. यार ये लॉक हो रखा है, इसका क्या करे ब्रो? Revelio. इसको तो पुश भी नहीं कर सकते हम, बहुत बड़ा पत्थर है। तो यहाँ जाके देखते हैं। उड़ा ही दिया। Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. We got it! How gracious of you. I tried. Accio! इसने क्या करा ब्रो? इससे क्या हुआ? कुछ हुआ इससे? That worked. ओ तेरी, ये हमने ये क्यों खोल दिया है? गलती से वो खोल दिया हमने उसका। एंड ये भी खोलते हैं। इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं खुल रहा ये वाला। ये खोल दिया। ओ ये रहा, यही तो चाहिए हमें। बढ़िया। बस और तो नहीं चाहिए हड्डियाँ, और चाहिए। यार इनमें से एक दरवाजा, ये वाला दरवाजा नहीं खुल रहा ब्रो। ये क्यों नहीं खुल रहा यार? सारे खुल गए। ब्रो सेबेस्टियन बताना। ये क्या सीन है यार? फाइंड अ वे। सारे खोल दिए, बस एक ये खोलना, और ये इसके पीछे ही हड्डियां हमें दिख सकती हैं। क्या करें? This looks different than what we faced before. हाँ Now we're also dealing with rune symbols. ओके, सिंबल्स का कोई सीन है फिर। 3 स्टार। अच्छा इस पे है ये वाला पॉइंट एंड सर्कल। सर्कल का है ये। ओके समझ गया मैं। ये एंड ये नहीं, यही तो था। ओके पहले ये वाला करना है हमने सीक्वेंस में। पहले ये एंड फिर ये। यप, सीक्वेंस में करना था। You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Revelio. कितना I see डार्क why Slytherin's student was so entranced with this place. है। यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे स्पाइडर आए। हेलो। ओ ये क्या हो गया भाई? रुक जा, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए वो स्पेल जो हमने सीखी है। मेरी स्पेल कहाँ है? ओए स्पाइडर आ गए यहाँ पे यार। ओए इसकी तो रुक जा।
For a moment there, I thought that'd never end. ओके तो हमने इम्पीरियो से इस वाले स्पाइडर को कंट्रोल कर लिया था कुछ टाइम के लिए, इसलिए कुछ ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ। चलो भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेन चीज़ को कलेक्ट करते हैं, रैलिक को। Revelio. Dead end. Lovely. All that for nothing. नहीं Hold भाई, on. रुक जा। Don't give up yet. The relics contain a abundant protein. Sebastian! Oh, The relic! Look! Could it be? हाँ। एक सेकेंड सेबेस्टियन, आ रहा हूँ। चलो भाई, सेबेस्टियन की बात। The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. क्या करें? रैलिक ले या रहने दे? ले लेते हैं। I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake. भाई हम अपने दोस्त की हेल्प taking it. करेंगे यार। Let's get to Feldcroft. हमें अपने दोस्त की हेल्प करनी है ब्रो, I बेशक। must keep this relic secret. Especially from my uncle. ओए, ये आगे कौन है? यार ये ओमनिस आ गया क्या? Is that ominous? यार अब ये Ominous. इनकी लड़ाई होगी। The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. लड़ो You're मत not. यार प्लीज। If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows. I won't step back from the यार fight. मत लड़ो भाइयों। Can't believe this. यार How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. हाँ तो Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. गाइस क्या कहते हो यार, काफ़ी टफ सिचुएशन में आ गए हैं। देखो सेबेस्टियन हमारा दोस्त है, उसको अपनी बहन की हेल्प करनी है, कर्स्ड बच्ची है वो, तो उसकी हेल्प हमें भी करनी है यार। लेकिन जैसे डॉक्यूमेंट कह रहा है कि आप ना लेके जाओ रैलिक, और ओमनियस बहुत अच्छा बच्चा है। ओमनियस कभी यार कहीं हम सेबेस्टियन का साथ देते रहे और कहीं सेबेस्टियन लास्ट में मर जाए, ऐसा कुछ हो जाए। क्या करें यार? लेट्स टॉक विद सेबेस्टियन। आई कैन नॉट साइड विद यू सेबेस्टियन। सेबेस्टियन सही तो नहीं है बट यार चल ओमनियस की मान लेते हैं यार, और क्या, क्योंकि गेम हमें बार बार कह रहा है रैलिक ना लेके जाओ, कहीं वो बेचारा सेबेस्टियन मर जाए। बहुत अच्छा फ्रेंड है ब्रो, ऐसा नहीं कर सकते। You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. ओके, I hope I don't regret this. गेम ने हमें अलाउ कर दिया भाई। Sebastian, we're ready. चल आजा। What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? आ जाना यार। I'll explain on the way. Come on.
यार मुझे लग रहा है हम ना कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं इस गेम में, सच बता रहा हूँ, मुझे दिल से ऐसा लग रहा है। सेबेस्टियन की यार मैं नहीं लड़ रहा इनसे, हो गया ये मिशन, यहाँ से चलते तो, क्योंकि ओमनिस What happened back there? Ominous and I found a compromise. Ominous simply needs a moment with you and he'll change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. यार सेबेस्टियन को कुछ हो ना जाए ब्रो। I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over again. देखते हैं यार आगे स्टोरी में क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन सेबेस्टियन मुझे तो अच्छा लगता है ब्रो, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। कुछ सीरियस ना हो जाए इसके साथ कहीं, रेलिक तो ले As we आए were हम। leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. ओके मुझे लगा ये बात करेगा पूरे रास्ते, करी बात, अच्छा ब्रूम स्टिक हम यूज़ नहीं कर सकते तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। आ जा पीछे पीछे जल्दी, कहीं यार हम इसकी बहन की मदद करने जाए और ये रैली की इसकी बहन को ही मारते ओमनिस हमारी बजाएगा फिर, और सेबेस्टियन भी हमारी When we get to बजाएगा। Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. हाँ ठीक है यार, देखते। वही इतना धुआं क्यों निकल रहा है भाई यहाँ पे? Oh no, this isn't good. What is it? हैं? Smoke, over there, by the hamlet. इतना धुआं क्यों है यहाँ पे? Feldcroft's in trouble. They're under attack. हेल्प करो हेल्प Let's करो, hurry. चलो चलो। तुम्हारी तो गॉबलिनों ने हल्ला मचा रखा है। हेलो गॉडमोड भी नहीं आ गया मैदान में। हेलो बेटा, क्या कर रहा है? ओए, स्पेल रेडी हो जा। Stay back! Keep out of the way! Bombarder! ये रही इसकी बहन एन। ओ ओए नहीं नहीं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इसने भी डार्क स्पेल यूज कर ली। अब इसका अंकल इसको डांटेगा, तूने डार्क स्पेल की यूज करी। भाई अपनी बहन को बचा रहा है यार, ऑब्वियसली कोई भी करेगा। Boy! What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. यार इसके अंकल के मैं जूत बजाऊंगा किस दिन इतने। अपनी बहन की हेल्प कर रहा है यार वो। What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. बिल्कुल यार। That goblin was going to kill her. You did the right thing, You 100%. did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts.
इसके अंकल के तो ना मारने का बहुत मन करता है। चल इसके अंकल से बात करते हैं पहले। इसके अंकल को आज सीधा बनाता हूँ। क्या प्रॉब्लम बेटे, वो मर जाती है एनी वहाँ पे अगर वो इंपीरियो यूज ना करता। What was he thinking? बताता हूँ। Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at Bilkul. all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? ये ना कसम से एक बात बताऊं हम लोगों को, ये अंकल, इस अंकल को हम पीट सके ना तो मजा आ जाए। अबे यहाँ पे गॉब्लिन एन को मार देते और तुम्हारा पूरा टाउन बर्बाद कर देते। मेरी और उसकी वजह से तू बचा है और फिर तुम्हारे नखरे। अगर मैं और सेबेस्टियन नहीं आते तो ये घंटा कुछ नहीं कर पाते ब्रो। बकवास। ये क्वेस्ट कर लेते हैं हम इसी में, क्या कहते हो? ये क्वेस्ट कर लेते हैं और ये जो मेन मिशन है इसकी नेक्स्ट स्टोरी बना लेंगे, क्योंकि ये अभी स्टोरी कंटिन्यू रहेगी, अच्छा रहेगा यार। ये कर लेते हैं। सेबेस्टियन से जाके बात करते हैं। कहाँ है सेबेस्टियन? हॉगवर्ट्स में है। कहाँ पे बेटा? यहाँ पे। इनके फैमिली ड्रामे में ब्रो मैं भी इतना जज्बाती हो रहा हूँ। जज्बाती हो रहा हूँ मैं भी काफी इनके फैमिली ड्रामे। Nice to see you, my young friend. नाइस नॉट टू सी यू ओल्ड फ्रेंड। इसके मैं सुन सुन के पक गया हूँ। हेलो बेबी। चलो भाई अंदर चले, बात करते थे वेस्टर्न से। ओके, यहाँ पे उसकी लड़ाई हो रही है उससे, ओमनिस से। ये भी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं यार। सेबेस्टियन से सब लड़ रहे हैं यार, हम उसका मोरल सपोर्ट है भाई, वरना वो अकेला पड़ जाएगा बेचारा, मर जाएगा कहीं। सेबेस्टियन मैं तेरे साथ हूँ ब्रो। Did you speak with my uncle? Yes. I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news.
ब्रो सेबेस्टियन, हम तो तेरे साथ खड़े हैं हमेशा। बाढ़ में जाइए अंकल ओमनीस। तू अपनी बहन की हेल्प कर रहा है यार, और इनके पेरेंट्स मर गए हैं बेचारे। और उसने गॉब्लिन को सही मारा, उसकी बहन मर जाती यार, वरना इसका अंकल ही गला है। खैर आई नो उसका अंकल थोड़ा ज़्यादा जज्बाती हो गए, तो मुझे लग रहा है सेबेस्टियन मरेगा लास्ट में बेचारा। ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है ब्रो। अगर ये गेम में मर गया यार, बहुत अच्छा दोस्त है। एक तो इस हॉगवर्ट्स स्कूल में ना ये भूत बोलते रहते, चिल्लाते रहते, इनके इतना गाइस क्या कहते हो मैं, ये करनी चाहिए या नहीं? आधा घंटे की वीडियो हो गई है, बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम ये करेंगे। मेन क्वेस्ट है, जल्दी जल्दी करेंगे, ज़्यादा लूटपाट नहीं करते, कर ही लेते हैं मतलब, क्योंकि क्वेस्ट ये सारी सेबेस्टियन के साथ है ना, इम्पोर्टेंट है। चलो, एंड हमारा फास्ट ट्रैवल भी खुले रहते हैं यहाँ पे, तो हमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा जाने में आने में, फास्ट ट्रैवल कर लेते हैं। Handy resource indeed, your field guide. It's like a place right out of a storybook. चलो ये क्वेस्ट भी कर ही लेते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी मेरे ख्याल से। I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Oh, sneaky या bombastic? बेबी हम तो bombastic चलेंगे। We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. ये हुई ना Very well. बात। And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. ये हुई ना बात ब्रो। After you. यार मुझे एक बात बताओ, इतनी इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी स्पेल अनलॉक करने का फायदा क्या अगर हम बम ना फोड़े यहाँ पे आगे, हंगामा ना There they मचे। are up ahead. ओए कुछ भी I'll नहीं let you है, lead. टेंशन ना लो इनकी तो। enters this mine. चुप कर। Imperio Crucius। You can't stop us. I can't stop you। ओए Incendio. गलती से मैंने ये यूज कर लिया। और भी है क्या कोई यहाँ पे? नहीं यहाँ पे नहीं। Revelio. लूट वगैरह इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हेलो All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. बिल्कुल। Nice work. थैंक्स फॉर हेल्पिंग ब्रो। हमें पता नहीं तूने कितनी हेल्प की है, बट थैंक यू। चलो इनकी This is going well. We make a good team. बहुत अच्छी टीम Do ब्रो। like that. ये बेस्ट बंदा है, इसके Once साथ again, मिशन we करने can में fight बहुत our मजा way आता है। through or be discreet. नो डिस्क्रीट ब्रो, डिस्क्रीट तो हम हो ही नहीं सकते भाई। तू चाहता है मैं क्रूशियो यूज करूँ तेरे पे? क्या यूज कर रहा है भाई? I won't rest. ये फोड़ ही दिया इसको तो हमने। Fun is a relative term. Revelio. It is. And that was relatively fun. फोड़ ही दिया उसको तो भाई हमने।
Revelio. चलो 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 चलते हैं। स्टेल्थ नहीं है ब्रो, स्टेल्थ वाले बंदे हम दिखते ही नहीं, इतने हरामी हैं। स्टेल्थ तो अपनी। ओए अंदर जा रहे हैं यार, कुछ ज़्यादा, कहीं मैं ज़्यादा वहाँ में आ रहा हूँ और मर जाऊँ अंदर जाती। ओह चलो ब्रो, तो ये वीडियो काफ़ी सही रही ब्रो। इसमें 2-3 मिशंस हो गए, एक मेन मिशन एंड 2 साइड क्वेस्ट एक तरह से। For better or for worse, we're in. तू फिर आ गया। Mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. नीचे नहीं जाना ब्रो, यहाँ से जाना है, यहाँ से जंप। संभल के आइयो सेबेस्टियन। I don't see any goblins in these webs. Strange. Disgusting for even a spider to prey on. ओए I will make you pay. अच्छा, इतना बड़ा हो गया तू अब। हेलो बेटा। Too many. They definitely think there's something here they want. ये लगा। Guardian Leviosa. चलो भाई आगे चलते हैं। It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs. Any ये number of them. एंट्री धमाल होती है। Thought to conjure stairs. चलो भाई। Revelio. यार एक तो ने स्पेल चेंज कर करके मेरा, यार मैं इसको क्यों नहीं हटा देता, इसको हटाता हूँ डिसइल्यूजमेंट को। हमें वो करनी ही नहीं है स्टेल्थ। Reparo. आजा सेबेस्टियन। कोई है यहाँ पे? ये क्या है? कितना गंदा है। छी। ये देखो लेवल 20 स्पाइडर घटिया। ओए ओए ये देखा, डार्क स्पेल्स का ये मजा है। सेकंडों में खत्म है, और फिर गेम हमें कहता है कि हम डार्क स्पेल यूज ना करें। क्यों ना करें भाई? अनफॉरगिवेबल कर्स यूज कर। ओए सो रहा है, मर गया। ओए ब्रो कुछ गड़बड़ लग रही है। सेबेस्टियन देख के रहियो यार। We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. तो फिर आ गई। इजी, इनका तो इजी काम है। आवाज आ रही है वहां से कुछ। We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome We distraction. have another fight on our hands. हेलो। ओए इधर आ। ओए भाई, ओए ओए ओए, एक सेकंड भाई। ये इतने सारे यहाँ क्यों आ रखे हैं यार? मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो भाई तुम?
क्या करा मैंने तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है? ओए मजाक का टाइम नहीं ब्रो। We're not finished yet. Incendio. ओए ये क्या कर दिया? ये क्या हुआ मेरे साथ? यार ये मजाक मस्ती में ऐसे ही होता है ब्रो, देख लिया आपने। खैर बेइज्जती तो हो गई, चलो। I will make you pay. Bombarder. Confringo. Finger. Incendio. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Bombarder. Confringo. ओए ये इतना बड़ा फाइटर। Incendio. Finger. Imperio. Incendio. Bombarder. Confringo. Defendo. Confringo. Incendio. Bombarder. Certainly cleared the room. I don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. We're much more fun to fight with. ग्रिफिंडोर बकवास हाउस है ब्रो। स्लिदरिन इज बेस्ट, सुपर बेस्ट। हमसे पंगा। Incendio. खुल जा सिमसिम। We can. A rune symbol above the cabin door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. ये क्या सीन है? Revelio. ये क्या सीन है ब्रो? ये क्या सीन है? देखो यार हम मर गए ना ऐसी मजाक मस्ती में, इसलिए कई बार हमें ना बहुत सीरियस गेम प्ले करना पड़ता है। सीरियस तो क्या मतलब, थोड़ा इज्जत में ही रहना पड़ता है। Incendio. फ्रीज नहीं, ये हमने करना था। Wingardium Leviosa. ओए जल क्यों नहीं रहा? Incendio. I wouldn't be surprised to find a couple more. Wingardium Leviosa. इससे कुछ लेना देना है। ओके ये यहाँ पे ऊपर भी एक, ये दोनों को हमने वो करना है। Incendio. तो दोनों को हमने मारना है 1 2। क्या नहीं खुला? डोंट टेल मी एक हो रहा। अच्छा एक ये रहा, ये रहा, ये रहा। ओके इन तीनों को मारना है हमने। सेबेस्टियन आगे से हट जा बेटा। रीसेट हो गए? Wasn't expecting that. खोल दिया फाइनली। चलो भाई चलो। ये क्या जादू टोना है यार। Revelio. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this Sebastian, mystery. I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Bombarder. ये क्या है यार, क्या करूं मैं इसका? चेक ऑन सेबेस्टियन। अच्छा इसे बात करनी है। If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen.
I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. यहाँ से Unless we can find another passageway to the Undercroft. कर लिया ब्रो, हमने तो फाइंड पहले का कर रखा है। सॉरी, तो ये क्वेस्ट जल्दी होगी। Moment of truth. It has to fit. हाँ, चलो चलो करो। Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. एक और चाहिए मैं। I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? प्रोफेसर फिक और लॉर्ड गॉक। इसको बता देते भाई अपना। A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? Yes. You know, goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went नहीं through? यार, ऐसा No, नहीं है भाई। Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? अरे गुस्सा कर रहा है। You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. तेरे मारूंगा भी मैं बहुत हवा में। Unbelievable. भाई सारे गॉब्लिन बुरे नहीं होते यार। लॉर्ड गॉक ने हमारी बहुत हेल्प करी है। ये तो सेबेस्टियन भी पागल है थोड़ा। हाँ, यहाँ मुंह बना के बैठा रहे, क्या कर सकता है। अच्छा, गुस्से में जा भी रहा है यहाँ से। ठीक है, जा फिर। तो ये 3 स्पेल हो गई है ब्रो। स्पेल कर रहा हूँ, 3 मिशन हो गए हैं। कोई असाइनमेंट नहीं है कि पोचर्स हाउस। आई शुड टॉक टू पॉपी एंड फाइंड आउट व्हाई शी लेफ्ट आफ्टर वीर। ओके, ये इंपॉर्टेंट मिशन हो सकता है, हम नेक्स्ट में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ एक ये ही है। डेड लियन का मैंने लाइक काफ़ी वीडियोस में बताया, नॉट इम्पॉर्टेंट। चाबियाँ है, हमें नील चाहिए, ये करना है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गाइस। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही ब्रो। खैर, I hope Professor Fin... I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. यार मुझे लग रहा है मैं सेबेस्टियन को बताना नहीं चाहिए था कि एक गॉब्लिन है, बट भाई सच बताना सही रहता है। उसको हमें लॉर्ड गॉक का नाम नहीं बताना चाहिए था। खैर, गुस्से में है तो गुस्से में रहेगा। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग गॉडमोड विनी। हमने देखो अब इम्पीरियो अनलॉक कर लिए। ये इम्पीरियो, अच्छा यहाँ यूज़ नहीं कर सकता स्कूल में, ठीक है। तो ये क्या ट्रायंगल बना हुआ है, कुछ मिस्ट्री। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई थिंक सेबेस्टियन के साथ कोई एक और इम्पोर्टेंट मिशन होगा जहाँ पे ये पेंटिंग हमें मिलेगी एंड फिर पूरा हम ये सॉल्व कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गॉडमोड विनी। इस वीडियो में हमने अनलॉक कर लिया इम्पीरियो। थैंक यू।